in this succession or successive series of William Shakespeare, in this video I am going to tell you about Shakespeare's sonnet. The most important, only important factors will be covered in this lecture. Okay, for your exam point of view, this video is very important for all aspirants. Okay, so well, first of all, as we know that Shakespeare published 154 sonnets, which you all know very well. You all are know very well 154 sonnets written by Shakespeare, and originally published in 1609 in quarto. And this folio, this 1609 quarto folio, published by Thomas Thorpe. Remember the name of Thomas Thorpe. And it is expected to be written during 1519 to 1908. Okay, and the another factor is sonnet number 138 and 144 had previously published in 1599. Miscellany means miscellany, the passionate pilgrim anthology में इस सोनेट 138 एंड 144 का ऑलरेडी जिक्र हुआ है, वो ऐसा कहना चाहता है. ठीक, सो अगर मैं उसके शुरुआत के जो 17 सोनेट हैं उसके द फर्स्ट 17 सोनेट्स जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए हैं, उसको हम प्रोक्रिएशन सोनेट के नाम से जानते हैं. किस नाम से जानते हैं उसे हम प्रोक्रिएशन सोनेट के नाम से भी जानते हैं. These are addressed to a young man. Procreation sonnets means such a sonnets which is delivered to which is written for a young man, pleading him to marry and have children in order to immortalize his beauty by passing it to the next generation. जो 17 सोनेट शुरुआत के लिखे गए थे उसे हम प्रोक्रिएशन सोनेट कहते हैं, जो कि ऐसे सोनेट एक ऐसे यंग मैन या युवा को उस समय एड्रेस करते थे या इंट्रोड्यूस करते थे, जिनका जो मेन टारगेट होता है मैरी करना, बच्चे होना, बच्चे मतलब कि शादी करना, उसके बाद बच्चे पैदा करना, उसके बाद जो है और अपने आप को इमॉर्टल करना, अपनी ब्यूटी को, ताकि जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन अच्छी हो सके. ठीक, सोनेट्स नंबर 18 to 126 आर कॉल्ड फेयर यूथ सोनेट. सो दीज टू थिंग्स you have to remember for exam point of view: procreation sonnets and fair youth sonnets. So procreation sonnets means the beginning 17 sonnets of Shakespeare called pro से आपको पता ही होगा, pro means before. Okay, and the after 18 to 126 are called fair youth sonnet. So these are the basic factor of Shakespeare's sonnet. Okay, let's talk about another factor, which is, if we have discussed procreation sonnets and fair youth sonnets, so now the other sonnets expressed the speaker's love for a young man, brood upon loneliness, death, the transience of life. So here transience means नश्वरता, means immortality, वही ना, means तो जब मैंने कहा कि जो उसके फर्स्ट के 17 सोनेट्स हैं उसको प्रोक्रिएशन सोनेट कहते हैं, बाद के जो 18 से 126 तो उसको फेयर यूथ सोनेट्स कहते हैं. उसके बाद ही रोट ऑल 154 सोनेट्स. सो व्हाट अबाउट अदर सोनेट्स?
Other sonnets he target means other sonnets he targeted to expressed what he expressed in other sonnets. He expressed speaker's love for young man, brood upon loneliness, death and the transience of life. ना जो जीवन की जो क्षण भंगुरता है, ट्रांजियंस मतलब होता है मीन्स यू कैन से अस्थायित्व ना, और वो होता है ना अस्थायित्व, मतलब वैसे हिंदी में तो अस्थायित्व बहुत, हिंदी में बड़ा इसका टफ है। तो जो ट्रांजियंस ऑफ लाइफ है, डेथ है, लोनलीनेस है ना, लव फॉर ए यंग मैन है, यंग मैन जो क्रैप करता है ना अपने प्यार के लिए, दी अदर सोनेट्स आर डेडिकेटेड टू दिस टाइप ऑफ phenomena. Okay, so if we talk about so we talk about next level. Okay, so in next level, from his sonnets 100 to 1 to 126 are probably dedicated to Mr. WH ना, WH एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि 1 to 126 poems are dedicated to whom. So here you can remember Mr. WH, or sometime it called William Herbert also. Okay, this man is a Earl of Pembroke. Okay, or some other critics or some other जो रिसर्चर हैं वो ऐसा मानते हैं कि ये इसे हम हेनरी रेथेस्ली भी कहते हैं, और अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन ना, जो मतलब कि जो हेनरी रेथेस्ली था उसे हम अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन कहते हैं, और जो विलियम हर्बर्ट था, कुछ रिसर्चर और इंग्लिश के जो स्कॉलर हैं वो ऐसा मानते हैं कि वो अर्ल ऑफ ब्रोक था। सो जो रैथेस्ली था, जो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन था, तो आपको दोनों फैक्टर याद रखने का। अर्ल ऑफ WH मीन्स WH को लोग ऐसे मानते थे कि क्या ये विलियम हर्बर्ट था WH से, या हेनरी रैथेस्ले था। ठीक, सो रैथेस्ले इज आल्सो द डेडिकेटेड ऑफ शेक्सपियर्स पोएम्स ना, बट वीनस एंड एडोनिस एंड रेप ऑफ लुक्रेसी, जो रैथेस्ली इज आल्सो द डेडिकेटर ऑफ शेक्सपियर्स पोएम्स वीनस एंड एडोनिस एंड रेप ऑफ लुक्रेसी। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है कि सच में क्या ये WH था या HW था। मीन्स कहते हैं कि रैथेस्ली जो था वो वीनस एंड एडोनिस और रेप ऑफ लुक्रेसी में उसको डेडिकेट किया गया है, लेकिन ये ऐसा भी तो हो सकता है कि वो रैथेस्ली ना हो के विलियम हर्बर्ट ही हो। तो वैसे आज तक ऐसे कन्फ्यूजन क्वेश्चन नहीं बने हैं। वो जब भी पूछा तो ये पूछा है कि मिस्टर WH, और बस ये सब नहीं पूछा गया। ठीक है, the other 127 to 152 sonnets are dedicated to dark lady na. In sonnet 114 she is described as my female able. Remember it, he says that in 114 sonnet he says that my female able and my bad angel. Okay, so these two minor quotes you have to remember in your mind: my female evil and my bad angel. She is identified as Aline Florio or Lucy Morgan, a fallen woman also called Lucy Negro or Emilia. So these are names. These are the names of that lady which is indicated by William Shakespeare in his sonnet number 114. So I again repeat that name was my female evil, my bad angel, and it considered that this is identified as Aline Florio or Lucy Morgan, no, which is a fallen woman also called Lucy Negro or Emilia. Okay, next, so as earlier I have said that these sonnets are called dark lady sonnets. Okay, so these sonnets means 127 to 156 are sonnets are called dark lady sonnets, in which the poet
speaks of a mysterious and beautiful mistress who has black hair and raven black eyes. So sometimes examiner has asked us to that that dark lady was in sonnet dark lady. uh, the poet speaks about what? So you can say mysterious beautiful mistress who has black hair and raven black eyes. In sonnet number 153 and 154, these two sonnets are dedicated to Cupid, which means Cupid is a god of love. Cupid जो जिन्हें हम जैसे हमारे यहाँ इंद्र हैं छिछोरे देवता सॉरी, वैसे ही क्यूपिड ना गॉड ऑफ लव एम्बलम है. And the rhyme scheme, very simple rhyme scheme, and which is known by every aspirants. So A B A B C D C D E F E F G G is the rhyme scheme of Shakespearean sonnet. So some we have some sonnets. Sonnet number 99 and which is contains 15 line. No, already it has 14, 4, 4, 8, 4, 12 and 14. But sonnet number 99, remember it, sonnet number 99 is contains 15 lines. Okay. So we have discussed about overall sonnets. No, we have discussed overall sonnets. Now we have to discuss about Shakespeare's important sonnets. Okay. So now we are going to discuss Shakespeare's important sonnets. So the first sonnet, I am not here complete. I am not going to complete his all sonnets, but important sonnets. Okay, which is important for exam point of view. So in this first sonnet, the means you have to remember the opening line of sonnets. So here I have mentioned only opening lines or important lines, which is very important for which is very prominent for exam point of view. Here the first sonnet, which is start with a line: from fairest creature with desire increase. So as earlier I told you that this first 17 sonnets are called procreation sonnets. So here you can also find that this is first among procreation sonnet, which is mentioned in 1 to 17. In these sonnets the poet persuades his friend Mr. WH, and now you can understand what WH stand here is. It is a Henry Rathsley or William Herbert. So it's up to you. So to start a family so that his beauty can live on to the next generation through his children. And the most important and ask मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो सोनेट नंबर 18 है, आई थिंक इसको आप पढ़ के जाइए. ठीक है, बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप एक बार अपने लेवल से पढ़ लीजिएगा. इसमें मैंने बस थोड़ा सा ही इसमें वो किया है, मतलब इसको खाली ओपनिंग लाइन है: शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे. इन दिस सोनेट ही डिस्क्राइब द यंग मैन्स ग्रेट ब्यूटी and suggests that his poetry is eternal, and ends with saying that as long as there are people who can still read the sonnet, the young man's beauty will still be there ना. तो ये सोनेट को जो है उसने डेडिकेट किया है एक सुंदर पुरुष के ब्यूटी पर, और इन द लास्ट वो ऐसा क्लेम करता है, दावा करता है कि अगर जैसे जैसे जब तक कोई इसको पढ़ेगा मेरी पोएम को, तब तक जो है एक जो पीपल है हु कैन स्टिल रीड द सोनेट, सो द यंग मैन्स ब्यूटी विल स्टिल बी देयर. मतलब जब जब ये रीडर इसको पढ़ेगा तो यंग मैन की ब्यूटी भी वहीं प्रेजेंट रहेगी. नाउ लेट्स कम टू द हिज सोनेट नंबर 13. एंड द सोनेट नंबर 13 ही सेज दैट बेन टू द सीजन्स ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट. when to the seasons of sweet silent thought. In this sonnet, poet
explain the sorrows and losses in his life. Okay, sorrows and losses in his life. He says that in this sonnet, poet realizes that the memories of his friend, no, the memories of his friend offer comfort to him from past sorrows. I think very easy sonnets. Next, we have to discuss sonnet number 33. Full many a glorious morning have I seen. Full many a glorious morning have I seen. I'm again I'm again say to you that you have to remember opening lines of Shakespeare sonnet. Okay, Shakespeare sonnets opening line you must have to learn before the exam. Okay, before appearing the exam. So, sonnet number 13, full mania glorious morning have I seen. This poem is about the loss of loved one. Okay, and the first line, and you have to remember what about this line, or what about this sonnet, or what about this poem. So, sonnet number 104, 104, the first line, opening line of to me fair friend you never can be old. To me, मेरे लिए fair friend you never can be old. दोस्त, सच में दोस्तों के लिए कभी भी कोई बूढ़ा नहीं होता, ये तो सच है। और शेक्सपियर ने ये बातें कह भी दी है कि टू मी, मेरे लिए भाई साहब, जो जो तुम मेरे मित्र हो ना, यू नेवर कैन बी ओल्ड। एक सच्चा दोस्त सच्चे दोस्त को समझ सकता है। बाय द वे, इन दिस सोनेट शेक्सपियर एक्सप्रेसेस द लव one person has for another by showing how the beauty of beloved does not change in the eye of a lover. Next, sonnet number 126. Oh, thou, my lovely boy, who in the power. It is in the form of 12 lines, consists of 6 rhyming couplets, seems about anticipating the death of fair youth. The famous expression sickle R appears at the end. Sickle R is mentioned. Point to remember that sickle R is mentioned in 126, the number of sonnets written by Shakespeare. Sickle R is a famous expression, appears at the end, and it is the form of 12 line, which is consisting of 6 rhyming couplets. So next we move on the sonnet number 13. My mistress eyes are nothing like the sun. Okay, in this sonnet Shakespeare expresses that my mistress is not the most beautiful woman, but she is no less beautiful than any woman that is described with false comparison. So he says that my mistress eyes are nothing like the sun. Okay, he satirizes the usual way of loving a woman, praising her lips and her hair, the way she walks, and all the things that a young man may rave about when he thinks about his beloved. So, in sonnet number 130, he expressed the human beauty and compare human beauty who show off their beauties. So this is satirical sonnet in sonnet number 130. Okay, now let's come very good, very important, very most prominent. Love is not time's fool. The rosy lips and cheeks within his bonding sickles can pass come. Love alters not with his brief hours and weeks, but bears it out even to the age of doom. If this be error and upon me proved. So this sonnet number 116 is also important. In this sonnet number 116, he want to, so okay, तो बताया ना, if this be iron. So the opening, if we talk about opening line of sonnet number 116, that one is let me not to the marriage of, this opening line, okay, let me not to the marriage of true minds and admit impediments. Love is not love which alters mind alters mind.
ना, और बेंड्स विथ रिमूवर टू रिमूव, ओ नो इट इज़ नेवर फिक्स। हमने ग्रेजुएशन में ये सब पढ़ा है ना, बीए के दौरान या ग्रेजुएशन में हमने इसको पढ़ा है। सो एंड लव नॉट टाइम फूल, द लास्ट 1 2 3 4 5 6, दिस इज लास्ट 6 लाइन, हाँ लास्ट 5 लाइन, और दिस इज लास्ट 5 लाइन, ओके। ओ नो इट इज़ नेवर फिक्स मार्क। सो वेरी फेमस सोनेट्स है, इसको मैं कह रहा हूँ इसको। ठीक है, सोनेट नंबर 116, 130 एंड और भी है, अब काफ़ी अच्छे अच्छे सोनेट्स हैं। और ये, हाँ सोनेट नंबर 30, सेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, ये तो आपको पढ़ के जाना है। ठीक, और एक कुक का नहीं, तो 4 सोनेट्स हैं आपको जो है ये, सोनेट नंबर 18 जो है, और 130 से 16, ये सब आप जो है इसको पढ़ के जाइए आप। ठीक है, ओके। इसी के साथ जो है हम अपना शेक्सपियर के सोनेट को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। आप इसको एक बार 2 बार जो है देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसी के साथ टाटा बाय बाय, सी यू सून विथ आवर नेक्स्ट लेक्चर। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि शेक्सपियर का एक वीडियो ऐसा बनेगा जिसमें सारा कुछ कंक्लूड होगा, सारा कुछ ऐसे वो सम्मिलित होगा उसमें, उससे बाहर कहीं नहीं आएगा। वर्क कर रहे हैं उस पर धीरे धीरे, वो जैसे ही पूरा होगा वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, हाँ एक बात और थी यार, वो कहते हैं ना, वो शायद बेल आइकॉन दबा दीजिए और वो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो वो जो है नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना, चलिए, लोग पहले कहते हैं, मैं सबसे बाद में कह रहा हूँ, भूल जाता हूँ वीडियो बनाते वक्त। चलो ठीक है, ओके, बाय बाय, सी यू सून, थैंक यू सो मच फॉर लविंग व्यूअर्स।